आज 26 मार्च 2023 संडे को 12 नून डॉक्टर KK HCFI एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट की राउंड टेबल में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो सभी व्यूअर्स KK अग्रवाल के डॉक्टर KK अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े, उनका सबका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू ई-वेस्ट, न्यू ई-वेस्ट रूल्स जो 2022 में आए थे। उसका टॉपिक यही है, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। और ये लास्ट मीटिंग के कंटिन्यूएशन में है। तो ये प्रेजेंटेशन हमने लास्ट में भी दिया था, तो बिकॉज अवर सम मेंबर्स ज्वाइन टुडे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा प्रेजेंटेशन को, देन विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन जो हमारा लास्ट संडे से हुआ था। तो फर्स्ट स्लाइड पे ही जो है अपना फर्स्ट स्लाइड जा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नवंबर 2022 में इसको नोटिफाई हुए, बिकॉज फर्स्ट रूल जो जस्ट बैकग्राउंड में 2011 में ड्राफ्ट रूल्स आए, 2012 से इम्प्लीमेंट हुए फर्स्ट रूल्स जो, उसके बाद फर्दर जो है सुपरसीड करके 2016 में न्यू रूल्स आए। और उसके बाद अगेन अबाउट आफ्टर जो है 6 years 2022 जो रूल्स हैं, दैट इज दी बेसिकली दिस ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। और इसको में इम्प्लीमेंटेशन के लिए अबाउट करीब 5 months का टाइम दिया गया। इट इज इफेक्टिव अभी जो है आज वाले 26 है, वो आफ्टर 5 days गोइंग टू बी दिस इम्प्लीमेंट दिस न्यू रूल्स। तो नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्यूज मी मिस्टर सर इसको आप उस पे कर दीजिए स्लाइड शो मोड में। अच्छा सर, हाँ सर, जी सपना थोड़ा स्लाइड शो में देख लीजिएगा। अभी शायद नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है सर, वो मैं कर रही हूँ, आप बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, मैं आई कंटिन्यू। जैसा कि सभी आप लोग ऑल फैमिलियर विद दी ई-वेस्ट बेसिकली रिफर टू ऑल आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो ट्रिपल है एंड इट्स पार्ट, जो चाहे उसके टाइम टू टाइम जो है सर्विसेज के हों, दैट हैव बीन डिस्कार्डेड बाय देयर ओनर एज वेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज। अगर रीयूज होता है दैट इज नॉट ई-वेस्ट। इफ इट इज फाइनल डिस्पोजल में जाता है, देन दिस इज कॉल्ड ई-वेस्ट without any further use. India is the basically just third largest e-waste generator in the world after China and the USA. Government has taken a number of steps to actually formalize the e-waste recycling sector of the country. Earlier used to be mostly the unorganized sector, but after that number of recyclers have come. So government of India has taken a number of steps, but definitely we have to go a long way. The management of e-waste is being carried out presently is under the e-waste management rule 2016 and their various amendments. Next slide. But the November 2022 Ministry of Environment Forest Government of India, which is the apex body, has notified the e-waste management rules 2022. These rules will replace the from 1 April e-waste management rule 2016 and will be effective from 1 April 2023.
So ये is going to be after 5 days, this new rule will take over. These rules will launch a new EPR. That was though already the number EPR regime is going on with the number of rules. And for e-waste recycling, basically EPR, we all know there is a policy-based approach where responsibility is casted over the producers of a specific category of waste for the treatment and safe disposal of such waste. EPR regime under 2020 rules provides an annual e-waste recycling target to the producer. Basically, earlier used to be collection based, now it is going to be recycling based. That is the target. E-waste recycling target to the producer. This will help in proper recycling and safe disposal of e-waste. Next. This is applicable to every manufacturer, producer, refurbisher, dismantler, recycler. All the manufacturer, producer, refurbisher, and recyclers are required to register on the portal developed by CPCB. This will be this mandatory. No entity shall carry out any business without registration and also not deal with any unregistered entity. No, but they have to register and also not to deal with the further any entity which is unregistered. Authorization has now been replaced with the registration through online portal, and only manufacturer, producer, refurbisher, and recycler required to register. There is for them this mandatory. Next one. This is Schedule 1 in the rules. This is extended, and now 106 electrical and electronics item equipment, that EEE, has been included under this EPR regime. Producers of notified electrical electronic equipment have been given annual e-waste recycling target based on the generation from the previously sold EEE or based on the sales of the EEE, as the case may be. Target may be made stable for 2 years starting from 60%. Abhi jo current 1st April 2023 se for 2 years is going to be 60% for this jo hai 23, 24 and 24, 25. Further, this target EPR that is given to 70% for the year 2025, 26 and 26, 27, and 80% for the 27, 28 and 28, 29. So this is the up to 80% target is given for the up to the financial year 2028, 29. So I mean, this is the target. Let's hope how much, because the earlier rules we could not gain much as we expected. So let's hope we'll get more, I think, the benefit from these rules. Next one. This is very important. The management of solar PV module panels cells added in new rules, because earlier is not there, because a lot of the solar, the PV panels are being installed as the India is the president of International Solar Alliance, and the number of projects are going on. This is very important to include that. The quantity recycled will be computed on the basis of the end product so as to avoid any false claim. A provision of the generation and transaction of PPR certificate has been also introduced. Provision for environment compensation and verification audit has been introduced, because the penalty was earlier the EPA rules under section 15, the imprisonment up to 5 years, fine up to 1 lakh, but this is environment compensation has been also been included in this. Provision for constitution of steering committee to oversee the overall implementation is included in these rules. This is time to time to further the implementation, to oversee the implementation. Also
any additional guidelines, policy, and things like. Next one. This new rules provision for reduction of hazardous substance in manufacturing of electrical equipment has been provided. This is very important. All the kind of lead, mercury, and all hazardous substance, it has to be reduced under these rules. It mandates that every producer of electrical electronic equipment and their components shall ensure that their products do not contain lead, mercury, and other hazardous substances beyond the maximum prescribed concentration. This is the limit they have given. The e-waste management will also provide the recognition and registration, skill development, monitoring, and ensuring safety and health of workers involved in dismantling and recycling. This is the mandatory all precautions, safety precautions, including masks, gloves, and all. This is very important. So for protecting the worker involved, this is also given responsibility given there. Next one. Responsibility of the manufacturer. What it is as per rule? All manufacturers have to register on the portal, the CPCB portal. The collect e-waste generated during the manufacturing of any electrical equipment and ensure its recycling or disposal. It's not just to simply, to send somebody, but it has to be registered recycler, has to be ensured by recycling, and also the final disposal, and this have to file, because all record they have to file the annual and quarterly returns. The laid down form on the portal on or before end of the month succeeding the quarter or year, as the case may be, to which the return relates. Next one. This is responsibility of the producer. The producer of electrical equipment listed in Schedule 1 shall be responsible for registration portal, obtaining and implementing a EPR target as per Schedule 3 and Schedule 4 through the portal, provide that the producer having its EPR under the provision of erstwhile e-waste rules shall migrate under these rules as per the procedure laid down by the CPCB with the approval of steering committee, because after 31st March you have to migrate from this existing rules to the new rules. That was it. Creating awareness through media, publication, advertisement, poster, or by any other means, and the final annual return as the case per the by the other like manufacturer and all. Next one. This is responsibility of the refurbisher, because a lot of the e-waste is the components are being used by the refurbisher and all. So all refurbishers have to register on the portal, collect e-waste generated during the process of refurbishing, and hand over the waste to register, recycle, and upload information on the portal. Ensure that the refurbisher equipment shall be as per compulsory registration scheme of the Ministry of Electronics and Information Technology also, and standard of the BIS. And then they have to also the final annual return and quarterly returns as well. Next one. This is responsibility of the bulk consumer. Bulk consumer, all the kind of organizations, government, non-government organizations, the all offices and different institutions. The bulk consumers electrical and electronic equipment listed Schedule 1 shall ensure that e-waste generated in them shall be handed over only to the registered producer, refurbisher, or recycler, not to any kind of a local vendor or thing like that. Next one. Then this is responsibility of the recycler, because they all finally goes to recycler everything. So the responsibility is very important. Recyclers shall have to register on the portal,
ensure that facility and recycling process are in the accordance with the standard of guidelines laid down by CPCB in this regard from time to time. Ensure that the provisions or material not recycled in its facility is sent to the respective registered recycler, because they maybe have not all recycling facility. So ensure that residue generated during the recycling process is disposed of in an authorized treatment storage disposal facility like TSDF for the hazardous waste and things like that. Next one. Maintain, they have to produce a recycler also maintain the record of the waste collected, dismantled, recycled, and sent to registered recycler on the portal, and make available all record of verification audit as and when required. File annual quarterly returns as the case in other cases of manufacturer, producers, or refurbisher. Accept waste electrical, electronic equipment or component not listed in Schedule 1 for recycling, provided they do not contain any radioactive material, and same shall be uploaded on the portal. Next one. Because this is the case in case of the Mayapuri, this incidents where some component from the recovered from Delhi University sent to Mayapuri, and there was a release of the radioactive material was there. So this was the responsibility of the recycler also. The create awareness through media, publication, advertisement, poster by such other means. Account for upload information about any non-recycled waste or any quantity which is not recycled and disposed of. Take help of dismantler of for recycling purpose, provided that it shall be soon to recycle to ensure proper material flow to and flow from dismantler, and the dismantler shall give dismantled material to the registered recycling. They have to maintain the proper record, then they can take the help of dismantlers. Next one. This is the responsibility of the various government institutions also given here. So by CPCB, the main responsibility of this rules is actually with the CPCB. Operation and maintenance of EPR portal and monitoring of the EPR compliance is with the CPCB. Coordination with the all state pollution control board. Prepare and issue guidelines and standard operating procedure for collection, storage, transportation, segregation, refurbishing, dismantling, recycling, and disposal of e-waste, and the rules from time to time, and also issue necessary form returns for implementation of these rules. Conduct random check for extending compliance of the e-waste rules, and may take help of custom, state government, or any other agency. So they have to do the random check. Next one. This is also the continuation responsibility of the CPCB. Documentation, compilation of data on e-waste and uploading on website of CPCB. Action against violators of the rules. Connecting training program to develop capacity building of the SPCB and urban local bodies official. Conducting awareness programs on e-waste management and the at different level, regional or central level. Legislation to make consumer responsible towards product usage and safe disposal. Integrate all stakeholders with the centralized system. Submit annual report to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Yeah. Next one. Further continued responsibility, enforcement of the provisions regarding reduction in use of hazardous substance in manufacturing electrical equipment, as spoken earlier. Interaction with the IT industry for reducing hazardous substances. Set and revise target for compliance to reduction in the use of hazardous substance in manufacture of electrical equipment from time to time.
This ensure restriction of the hazardous substance compliance, ROHS compliance, and its certificate through a recognized lab and sanitary checks. Any other function delegated by Ministry of Environment, Forest, Climate Change under the rules from time to time. Next one. This is the responsibility of the State Pollution Control Board, State Pollution Control Committee, the inventarization of the e-waste, until unless very important, whatever can be monitored or measured, that can be managed. So this principle, inventarization of the e-waste is very important. Monitoring and compliance of the EPR as directed by the CPCB, conduct random inspection of the recycler, refurbisher, and monitoring recycling capacity utilization, implementation of programs to encourage environmentally sound recycling, and any other function delegated by the Ministry of Environment, Forest, or CPCB under these rules. Next one. This is responsibility of the local bodies. This is also very important because for direct consumer, this is very linked with the direct from the household consumer standpoint. To ensure that e-waste, if found to be mixed with the municipal solid waste, properly segregated, collected, and is channelized to register recycler or refurbisher. I don't know how is possible because it still local kabadi wala and the vendors, people are because of they getting money, so it is going to the local kabadi wala things. How municipality will take up this matter so that is segregated and goes to recyclers. To ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelized to a recycler or to facilitating a e-waste collection, segregation, and disposal system, setting of the facility, and conducting training sessions to develop capacity of the urban and rural local body. So this is very big task too, because other rules also being responsibility is given to municipality and the local body, but I don't know how the effectively it will be there. Next one. So thank you, and I will end the presentation now, and you will. So this was the presentation based on the rules prepared, and it was presented last Sunday. Since our new members, our 2 days, it was again I presented. I tried to include all the components. So now we'll start with our discussion today, and I'll request our mentors, Partho Syagi sir, first for your comments, valuable suggestions, because the e-waste the rules were time to time, I think is third time new rules have after superseding the earlier rules, but I don't know how, because it's still I think more than 60-70% is still with the unorganized sector. So how these rules will help in the going to maximum to recycle the authorized recycler to do that. Over to Tyagi sir. Thank you, Dr. Anil Kumar. It was a very good presentation you made. I did not attend the last meeting, so I was very much benefited by your presentation. I am also happy to see that rules have been revised within 6 years. Somebody is in my room. Which is something I am a bit surprised also, because
when this environment policy was made in 2006, it was prescribed in the policy itself that it will be reviewed and revised every 5 years. And already 16 years have gone by without a single revision. Unfortunately, our sequence has not been right. There should be policy first, then law, then implementation. Here we had law first, then we started with its implementation, and after some decades, we came up with a policy. So policy almost became a redundant document. But in order to bring it into force, I think that should also be looked into. As regards the rules that have been suggested now to be made effective from 1st of April, one of the problems you have mentioned is segregation, and the other is that the collection is sometimes such that my experience in a previous place where I was living was that as citizens we started putting dry and wet waste separately, and the agency which came to collect it used to put it into a single bin. So as a result, all our efforts to segregate were annulled by the agency that was collecting them. So segregation is very important and has to be taken through. But the thing is that supposing I have a battery which is now not having any power, I will very often just throw it along with the municipal waste as a dry waste. And therefore, very clever people need to be there in order to segregate further from the waste that has been generated by the consumer. Then I find very little guidance. I think there should be a manual. Rules probably cannot provide it, but there has to be much more guidance as to how various useful things can be recovered from it. If you leave it to the agencies, they will naturally be interested first in what they know, second, what can be done at least cost with maximum profit, and then not have the botheration of dealing with the rest. So, whereas the net residue could be much lower, the present situation where knowledge and guidance about this matter is lacking, the net residue is likely to be much higher. These were just the 2 points I wanted to mention. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. And definitely a lot of scope for the, further to improvement for the, and particularly in the guidelines, so that it is very effectively implemented, and the whatever the some kind of clarity not there should be covered in the under the guidelines and things like. Thank you, sir. Now I'll request the Shyam Gupta ji
for his comment, because he was also in environment field for some more than about 30-40 years, though more specialized in the air pollution, but particularly the all linked to air pollution. So I'll request Sri Shyam Gupta ji for his comments on that. थैंक यू अनिल जी। मेरे दिमाग में 3-4 बातें आई आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद। बहुत एलेबरेट प्रेजेंटेशन था और बहुत कुछ समझ में आ गया कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, लेकिन 3-4 उसमें मुझे ऐसा लगा कि गैप्स हैं जो गवर्नमेंट को थोड़े से फिल करने चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि सीपीसीबी जो है ये ओवरसी करेगी कि हैजार्डस मेटल का कंजम्पशन इन इलेक्ट्रॉनिक मेटल्स में कम हो, जिससे हैजार्डस वेस्ट कम जनरेट हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम सीपीसीबी कर सकती है। इस काम को तो R&D इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, या जो डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करती हैं, वही लोग इस चीज को बेहतर समझते हैं और कौन सी चीज कैसे कम की जाए उसको समझ सकते हैं। ये सीपीसीबी के मेरे ख्याल से डोमेन में या उनकी कॉम्पिटेंस में ये सब नहीं आता। किस तरह से हैजार्डस सब्सटेंस को कम किया जाए। ये तो ठीक है कि वो ओवरसी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, बिल को कम नहीं कर सकते। और जो दूसरा मैंने इसमें गैप देखा वो ये कि सभी को इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। सीपीसीबी, एसपी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोकल अर्बन बॉडीज, लेकिन जो इंडिविजुअल कस्टमर है, बल्क कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो सबसे बड़ा बल्क कंज्यूमर है। मतलब चाहे उसके पास क्वांटिटी कम इस्तेमाल करता हो, लेकिन उसका नंबर इतना ज्यादा है कि उससे कैसे आप ये मैनेजमेंट कराएंगे। आप बल्क कंज्यूमर के ऊपर आपने रेगुलेशन बना दिए, लेकिन जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनको जब तक आप कोई बाईबैक स्कीम या कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं देंगे, दे विल नॉट बी टेम्प्टेड टू गिव इट टू ए रजिस्टर्ड रिसाइकलर और कलेक्टर और इस तरह की किसी एजेंसी को, जिससे वो इकट्ठा हो सके और सही जगह पे जा सके। मुझे लगता है कि बाईबैक स्कीम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, इस कलेक्शन प्रोसेस में अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि RWAs को इन्वॉल्व करने की अब सख्त आवश्यकता पड़ गई है शहरों में, कम से कम, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग भी हो गई हैं और काफी इफेक्टिव भी हैं। और अर्बन लोकल बॉडी से हमें ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी से थोड़ा हटके सोचना चाहिए अब, और अर्बन लोकल बॉडीज पे ये जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा डालनी चाहिए। और अर्बन लोकल बॉडीज को RWAs के साथ मिलके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को थोड़ा सा टारगेट करना चाहिए, जिससे ये काम आसानी से हो सके। और मेरे मन में तो ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीपीसीबी के ऊपर डालते जाएं। सीपीसीबी के पास ऑलरेडी इतनी कम मैन पावर है, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो उनके पास भी कॉम्पिटेंस मुझे को लगता है कहाँ है और कहाँ आदमी है, कैसे करेंगे वो सब। एक ही आदमी के ऊपर, जो आदमी 1980-81 में जिस काम के लिए रिक्रूट किया गया था, जहाँ से वो आए थे, जिस बैकग्राउंड से, अब उनके ऊपर इतनी तरह तरह के काम आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि सीपीसीबी इसको बहुत इफेक्टिवली कर पाएगा। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट अगर क्रिएट किया जाए तो शायद वो इफेक्टिवली इसको कर पाए। और जो लास्ट में एक मेरा सजेशन है कि ये जो रूल्स का वर्ड होता है, ये बड़ा
आदमी को डरा देता है। इस रूल की जगह इस वर्ड को गाइडलाइंस की तरह इस्तेमाल किया जाए, रिप्लेस किया जाए, ये गाइडलाइंस हैं लोगों के लिए, सबके लिए, तो शायद लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट करें और कोशिश करें इसको अडॉप्ट करने की। बस इस स्टेज पे मुझे इतना ही सजेशन देना था, बाकी और लोगों की। थैंक यू गुप्ता जी। बट थोड़ा सा ये है कि गाइडलाइंस में वो मैंडेटरी नहीं हो जाती हैं, वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। रूल्स में आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलरली फॉर रिसाइकलर, नॉट फॉर जनरल कंज्यूमर, पर फॉर रिसाइकलर्स, मैन्युफैक्चरर, उनके लिए रूल्स होने से थोड़ा सीरियसली हो जाता है जी। लेकिन जब तक जनरल भागीदारी नहीं होगी, ये बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रूल्स में लैकिंग है वो कि इंडिविजुअल जो है, जो पर्टिकुलरली जो कस्टमर है, जो भी इंडिविजुअल जो जनरेटर है वे, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो कहाँ पे, अगर वो म्युनिसिपैलिटी में देगा, म्युनिसिपैलिटी कितनी इक्विप्ड है, वो ऑलरेडी जो चाहे वो प्लास्टिक हो या और कोई हो रूल्स में सॉलिड वेस्ट, तो वो चीज इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा दैट वे। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल को, कस्टमर को, इंडिविजुअल कंजम्पशन को, जनरेटर को, वो कहीं पे कलेक्शन सेंटर पे विधि लिंक किया जाए जी। करेक्ट जी। तो ये मैं नाउ आई थिंक डॉक्टर द्वारकानाथ हैं क्या यहाँ पे अभी? हाँ जी। अरे सर, मैं वही देख रहा था, एमडीएन पहले आप उससे ज्वाइन करते थे ना, तो मैं तो पुराना आपको रिकॉल हो गया जो है ना। तो सर वेलकम इन दी मीटिंग एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू योर, बिकॉज आपने तो ईवेस का स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी रूल से, तब से आपने जो है बहुत सी चीजें, और हम लोग दिल्ली में तो बहुत से सेंटर कलेक्शन के लिए वो लगवाए थे बॉक्स वगैरह भी। ओवर टू द्वारकानाथ सर, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन इस फील्ड के हैं। थैंक यू डॉक्टर अनिल, एंड थैंक यू टू ऑल अदर members, and namaskar to Tyagi Saab also. And here I have prepared just some 4 or 5 points on what I thought. Actually we have communicated this during the draft stage also, but somehow some points have not been incorporated, maybe to the best reasons known to CPCB. One, like how local bodies have a different approach and strategies for collection of waste. Like that, across pan India, they cannot have a single collection strategy. They should have a different approach, and strategies are needed, especially in the low income group and economically weaker section colonies. So there should be a robust mechanism for addressing this particular issue. Now we cannot say that economically weaker section does not produce electronic waste. You name electric and electronic gadgets, all are available, and they are using those gadgets as well. This is one. And recycling targets are given for various manufacturers. It should be the in situ waste. Many people, what they are doing, this is happening in the plastic waste also. We have raised this with CPCB and the ministry earlier also, that recycling, they are simply importing the waste and then showing it that they have collected it and then they are recycling it. खंडेलवाल जी को अच्छी तरह पता है, आप चांदनी चौक में अगर चले जाएं, आप बता दें कौन सा वेस्ट चाहिए, वो वेस्ट छोटा से बंडल में 100 ग्राम में आपका मिल जाएगा। आप उसका क्वालिटी और क्वांटिटी एग्जामिन करो,
उसके बाद आप कितना टन चाहिए उतना टन आपको मिल जाएगा. Where from it comes, they will tell different names of different countries. So we have to have some kind of checks and balances to ensure that recycling targets are met with the in situ waste that is generated in India or manufactured from the products of that particular manufacturer. That needs to be ensured. And this, to my surprise, we are advocating NGOs as well as many other organizations are advocating for right to repair strategy should to be there. In electrical and electronic gadgets, especially in electronic gadgets, ये right to repair का ये चीज है ही नहीं है. अगर आपको हो गया तो ये तो गया है जी, आपको तो नया लेना है. So this needs to be incorporated somehow, and this needs to be incorporated by putting a mandatory class to the manufacturer. अगर इस बार नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट अगले अमेंडमेंट में इसको प्रेशराइज करके डालना जरूरी है. एंड यू नो, सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स, ये भी एक चीज है. कॉस्ट कटिंग करते 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 कंपटीशन में ये लोग जो नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स में, वो एक साल भी नहीं आता. देन यू आर लूजिंग नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इज आल्सो गोइंग फॉर अ टॉस, एंड यू आर परचेसिंग a laptop or a computer at a lesser cost because of the cutthroat competition, but the product does not last. So this is another thing which needs to be taken care of, and establishing a collection chain mechanism that we are advocating for so many years, somehow that is also not there. And you know, there should be a different strategy for urban, semi-urban and rural areas. In the municipal solid waste rules amendment, it has come very exhaustively. What at different village level, panchayat level, gram panchayat level, what strategy should be adopted, who will be responsible. That kind of a framework should come in this waste management rules also. Otherwise, we know in India we have the economy mostly dominated in the unorganized sector, and that being the case, a different strategy has to be there to address the waste management from the unorganized sector and also from the rural areas. These are my opening remarks, and I think all these points I will send it to Dr. Anil. It is there in the form of a PowerPoint with me, so yes, that this can be appropriately incorporated and can be communicated from Healthcare Foundation of India to CPCB as well as to the ministry as well. Thank you. Thank you, sir. The important points you raised there, because your experience based on these so many years in the Delhi government and the Puducherry government, that was the, and you really raised the important point. And very important is still the
I was talking about suppose I know the subject from, and I was in the department and the pollution control board. Even I have to send, suppose when I want to send any e-waste, I'm thinking where to give that person. Recently, I wanted to discard some kind of old VCR and cassettes and so many things. So I was thinking where to give that. Then I know my friend, he is in recycling industry. I sent the entire that waste to his house first. So he'll taken over there. So this is because I know that. I mean, where to give? I mean, suppose I have so many things at mobile or other things or old kind of laptop. So until unless this collection centers mechanism for general public is not established, maybe we started with the Delhi government, we started the collection center in different schools and different institutions, including Delhi offices, Delhi Secretariat. So this is the very important for the general like generator, जो household generators उनके लिए. Municipality से अगर दिया तो it will be mixed and ultimately will go to landfill that way. So I think, and now I'll request the Pradeep Khandelwal ji over to this issue. So at least he is a more experienced person with dealing with the municipal all kind of mixed waste. So we can throw light on this point particularly. I request him. Yeah. सबसे पहले तो सबको नमस्कार. मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ ये नया रूल देख के. जो मेन जनरेटर है ई वेस्ट का वो ही मिसिंग है इसमें. Yeah. जो ई वेस्ट का जनरेटर है वही मिसिंग है इसमें. प्रोड्यूसर को दे दिया, कलेक्ट उसको मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, लेकिन जनरेटर मिसिंग है. तो वो बहुत जरूरी है इसमें. मतलब द्वारकानाथ जी ने थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इन्वॉल्व तो किया लेकिन पूरा नहीं हो पाए. तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है. और ये बात सबको पता भी है. ये बिल्कुल वही सिनारियो बनता जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट तो बहुत बना दो, लेकिन ओनली 10% कंस्ट्रक्शन इज ऑथोराइज, 90% इज अनऑथोराइज. यहाँ पे हालांकि केस उल्टा है, 90% इज अनऑथराइज, 10% इज अनऑथराइज. इतने ज्यादा यूनिट्स यहाँ पे लोकल यूनिट्स बन गए हैं जो कोई भी परमिशन नहीं लेते हैं, कोई भी अप्रूवल्स नहीं लेते हैं और सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं. चाहे वो बटन सेल हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, कोई भी चीज हो, सब चीजें दिल्ली में ही बन रही हैं. तो एक तो जनरेटर बहुत इम्पोर्टेंट है. एक अनऑर्गेनाइज, मतलब I cannot say unorganized, I can say the word is unauthorized. Manufacturers और unauthorized generators भी इसमें इन्वॉल्व, उनके बारे में भी सोच के रूल में कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट करना है. मतलब जो लोग परमिशन नहीं लेके भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका क्या होगा. और वो जैसे प्लास्टिक में हम नहीं रोक पा रहे हैं, सेम चीज हर सेक्टर में आ रही है. सॉलिड वेस्ट में थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई है केवल सॉलिड वेस्ट में. बाकी जितने भी वेस्ट आ रहे हैं उसमें अभी तक इस बारे को नहीं सोचा गया है. तो सबसे पहला तो यह है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर. जनरेटर मीन्स इंडिविजुअल्स और द बल्क जनरेटर्स. लाइक ऑफिस है, वहां पे
100 कंप्यूटर्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा ऑफिस, पूरे ऑफिस का ई वेस्ट जाएगा कहाँ, या तो इसमें जनरेटर और बल्क जनरेटर की डेफिनेशन ऐड होनी चाहिए। जनरेटर में इंडिविजुअल भी हो सकता है और बल्क भी हो सकता है, और उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इवन इफ द मैन्युफैक्चरर or the producer is not able to track me, then what I will do? So I must have some certain responsibilities to do this thing. और बाकी 2 पॉइंट जो द्वारकानाथ जी ने कहा वो I do 100% agree with that. That should be incorporated, proper collection system and this thing processing system of the waste, because जो प्रोड्यूसर और वो सब नहीं है, वो ई वेस्ट जनरेटर नहीं है, तो ई वेस्ट नहीं, ई मैन्युफैक्चरर्स हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी। सर राजेंद्र जी, हम बिल्कुल आपके पास ही आ रहे हैं बस। जी सर, खंडेलवाल जी हो गया सर, बाद में कर लेंगे। थैंक यू। तो ओवर टू आर जिंदल सर, और सीपीसीबी मिनिस्ट्री दोनों में जी, दोनों का एक्सपीरियंस है, सीपीसीबी मिनिस्ट्री रूल्स और उसमें सब में। जी सर, मैं अपना वीडियो नहीं चला रहा हूँ, फिर क्या कई बार क्वालिटी खराब हो जाती है। नहीं सर ठीक है। हाँ, नहीं, आप वीडियो में अच्छा आ रहा है, आवाज भी अच्छी आ रही, दोनों। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। इशू ये है बॉस, मैं थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग की तरफ भी जाना चाहूंगा। सी हम जो है ना एकदम सरकारी बाबू हो गए। रेगुलेशन, परमिशन, अथोराइज, इलीगल, मुझे ये बताओ, मैं आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं रिलेटेड पोल्यूशन से रहूंगा, सीमापुरी लीगल है या इलीगल है? सीमापुरी इज अथोराइज्ड कॉलोनी, लीगल कॉलोनी, डेवलप्ड बाय डीडीए इन 1968। उसका सुवेज का ट्रीट होता है क्या? What do you mean by, accept the vocabulary in Cambridge dictionary? What this authorized and authorized, legal, illegal means? Society has to remain, it has to behave, it has to earn. We cannot have too many regulations. एक इंडस्ट्री बनाने के लिए मुझे अगर अपना कमरा बनाना है घर में, मुझे किस किस से परमिशन लेनी है, कृपया करके इसकी वेबसाइट बना दीजिए। मुझे अगर बटन सेल बनाना है, मुझे किस किस से परमिशन लेनी है, किसके सीट पे जाकर के सलाम ठोकनी बता दीजिए। 25 इंस्पेक्टर आते हैं, तो ये क्या है? मतलब एक कि हम जो अचीव करना चाहते हैं टारगेट को अचीव नहीं कर पाते और हम उलझ के रह जाते हैं इन चीजों में कि भाई ये कानूनी है, गैर कानूनी। नियमों में भी सरकार में कोई सुनता नहीं, और सरकार क्या मतलब वो फुल ऑफिसर्स हो जाते हैं कि भाई ये डॉक्टर अनिल कुमार ने लिखा, बोले वो रिटायर होके रिजाइन करके चले गए, अब क्या मतलब है? जिंदल ने लिखा है और रिटायर होकर के अच्छा वो मैं सिखा रहा, ये फीलिंग है। अब ये बताइए, ये डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में ई वेस्ट का कंपोनेंट भी आता है। वेयर इट हैज टू गो, देयर इज नो लिंकेज। डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट आपने बना दी, आपने वहां पे अदर वेस्ट नाम लिख दिया हैजार्डस वेस्ट रूल्स में। तीसरे में वो दे दिया म्युनिसिपल जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट रूल, उसमें और जो ई वेस्ट में अलग नाम दे दिया। उनकी लिंकेज आपस में वो स्थापित नहीं है, जबकि एक ही डिवीजन मिनिस्ट्री
का देखता है, CPC भी गाइडलाइन बनाता है। तो there is a confusion, and confusion is not from today, it is quite some time. 2016 में लेटेस्ट रूल बने थे, उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसमें प्लास्टिक का कंपोनेंट है। आप ये बताइए, ई वेस्ट में गारंटी कहाँ है कि ये प्रोडक्ट 6 महीने चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी? Why you can call a consumer as a generator? It is the manufacturer who is a generator. There is no quality control. Who is doing the quality control? आप बताइए मुझे, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है गवर्नमेंट का, अगर आप इतना ही वो कहते हैं। फर्दर, how many municipality are disposing their domestic hazardous waste? Kindly, I will give you the data. There are 3: Indore, New Bombay and Chandigarh. और उसमें क्या आ रहा है मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज आई एम क्लोजली एसोसिएटेड। कहाँ है म्यूनिसिपैलिटीज? उनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके मेयर फेयर सब सिस्टम है पूरा का पूरा। सो देयर इज, और रूल्स हैं 2000 से, 2016 में फिर ये सब रिवाइज हो करके, और उसके बाद में उसमें डोमेस्टिक हैजार्डस का कंपोनेंट आ गया। So there is a confusion, great confusion. You have started. I give my tribute to Dr. KK Aggarwal sir. He has started this series, and you are carrying this forward. But at times, we have to be. Now we are almost 55 or 60 plus, most of our members, and we have led our life, and we should try to resolve the issue instead of just creating another issue कि भाई वो नहीं है तो वो हो गया, और वो नहीं है तो वो हो गया। सबसे पहले है, मेरे पास EC का टीवी था, जो कि 1976 से लेकर के 1988 तक चला, 12 साल। अब ऐसा कोई टेलीविजन दिलवा दो जो 12 साल काम कर जाए बिना रिपेयर के। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीफोन में, आपको टेलीफोन निर्माता है जो ई वेस्ट कैसे आती है, आप उसमें कंपटीशन है समाज में, आपने ऐसा वो कर दिया है कि यार इसके पास तो वो है, मेरे पास वो है, अच्छा वो 55,000 का, वो या तो 25 में मिल रहा है, मैं तो 1 लाख का खरीदा, और उसको डिस्प्ले करते हैं आज। सो यू आर कंज्यूमिंग, you are creating a frustration in the society. बच्चे को नहीं दिलवाओ तो बच्चा पागल हो जाता है, पेरेंट्स से वो विद्रोह कर देता है, और जो पुराना फोन है वो फिर ई वेस्ट हो जाता है। Now where we stand? What is my target? My target is economy, consumerism, or the environment and e-waste management. And government is a party to it, let me tell you. Because government हर चीज को या तो कंट्रोल करे तो फिर ठीक से करे, एंड कंट्रोल में रैशनलाइजेशन। जर्मनी में कंसर्टेड डिस्कशन, अगर किसी कोने पे सड़क को तोड़ करके या पार्क को तोड़ करके टॉयलेट बनना है तो दे डिस्कस, एंड दे से वी डिस्कस फॉर months together, and when discussions happened and decision is taken, that is implemented. That is not happening in our society. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you, sir. Thank you for. It is other aspect of the. This is holistic, that your view that was the should be every aspect has need to be before implementing, it should be taken care of. Thank you, sir. Thank you. So now I'll request Lokesh Kumar ji, Lokesh
केसी, अगर आपके व्यूज हैं पर्टिकुलरली, सो या। नमस्कार सभी पैनल मेंबर्स को। देखिए, मैं इसको एक गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे मैं लिखता रहा हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक समझने की कोशिश करूंगा और अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी एक्सपर्ट है, उन्होंने काफी बातें कही और उससे भी मैंने कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाले। देखिए, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि हमारे लेजिस्लेशन बहुत इमेच्योर्ड आ रहे हैं आजकल। उसका रीजन ये है कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर से हम कंसल्टेशन प्रोसेस में नहीं करते। जैसे कि यहाँ इतने हमारे सीनियर जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, सीपीसी और सब तमाम इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम किए हैं, मुझे नहीं पता कि स्टेक होल्डर से इसको लॉ को लाने से पहले कितना डिस्कशन डिस्कोर्स हुआ है। हमने काफी ऐसे लॉ देख, फार्मर्स लॉ इज अनदर वन वे, यू नो, lot of people said not one consultation has been done, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी वजह से काफी जो हमारे आज की डेट में कोर्ट में लेजिस्लेटेड है उसमें गवर्नमेंट के जो मुकदमे हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। हालांकि देयर इज अदर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बट माय लिमिटेड पॉइंट है कि हम लॉ और कानून फटाफट लेके आते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सुनामी आ रही है ई वेस्ट में, तो साहब फटाफट हम जो है कहीं वेस्ट से उठा के कट्रेस कॉपी कर दिया। द्वारकानाथ जी ने एक बात कही जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस एक बार था। मैं जब एससीएल में काम करता था तो मुझे एक दुबई के किसी एक्सपोर्टर, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार मैं ई वेस्ट बेचना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ई वेस्ट तुम कैसे बेचोगे भाई? ई वेस्ट तो एचसीएल खुद जनरेट करेगा या कुछ करेगा, उसका मुझे उस समय लेजिस्लेशन का आइडिया नहीं था। तो ये, और उन्होंने तो खैर उसको चांदनी चौक भगीरथ प्लेस से भी बताया, जो कि तो आइडिया ये है कि यदि मैन्युफैक्चर पे आप इस तरीके के इम्पोजिशन करोगे, एंड द सेम पॉइंट हमारे त्यागी जी ने और बाकी लोगों ने भी बताया कि देखिए, आप सबसे बड़ा जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर जो हम लोग हैं, जैसे अनिल जी ने भी कहा कि मुझे सपोज अपना पुराना वीसीआर या कोई चीज डिस्कार्ड करनी होती है, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किसको दूं। मैं अपनी सोसाइटी के जो नॉर्मल है उसी को दे देता हूँ, या कबाड़ी आता, कबाड़ी कहता सर 5 रुपए दूंगा, या सर ये तो कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसे दे दीजिए, मैं उसको दे देता हूँ। वो क्या करता है क्या नहीं करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको पता है। तो मेरा सबमिशन ये है कि हम लेजिस्लेशन बिना स्टेक होल्डर्स के ऐसे लाएंगे तो ये हॉर्स बिफोर द कार्ट वाली बात उल्टा हो जाएगा कि हम कार्ट लगा रहे हैं हॉर्स से पहले। सेकंड थिंग, मैं जो लिमिटेड पॉइंट में बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि कैपेसिटी क्या है हमारे पास। अभी भी एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में केवल 25% तक ईवीएस आप जो है कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद से कितनी कैपेसिटी जनरेट हुई है, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सेकंड रोल ये है जो कि हमारे जिंदल साहब ने भी कहा कि जो रोल मॉडल आप कहाँ हैं, सबसे बड़ा रोल मॉडल तो गवर्नमेंट हो सकता है। तो आपके गवर्नमेंट भी क्या ईवीएस का इस तरीके का कुछ ऑलरेडी आप रोल मॉडल दे रहे हैं सोसाइटी को कि भाई हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, या ये एवेन्यूज हैं, ये ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से लेजिस्लेशन आना अच्छी बात है, क्योंकि यूएन का और बाकी मैंडेट रहे होंगे, लेकिन एक व्यवहारिकता इसमें टोटल मिसिंग। धन्यवाद। थैंक यू लोकेश जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंक्लूडिंग द गवर्नेंस और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का रेज किए। सो नाउ फाइनली आई रिक्वेस्ट नीरज जी, आपके व्यूज हैं, देन आफ्टर दैट
we'll close our meeting. जी नमस्कार, थैंक यू। मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अनलाइक 2016 rules, 2022 rules expressly introduced provisions related to environment compensation and prosecution under section 15 of Environment Protection Act 1986, and further the environment compensation can also be imposed on an entity which aids or abets the violation of 2022 rules. This widens the scope of imposing environment compensation. अब हम जो एज पर स्टेट्स अवेलेबल, चाइना यूएसए के बाद इंडिया इज द ग्रेटेस्ट यूएस प्रोड्यूसर. For creating vibrant recycling market, the possibility of regulating the role of e-waste collection centers, वो भी होना चाहिए. ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर को भी रेगुलेट करना चाहिए. प्रोड्यूसर responsibility organization and dealers under Rule 2022 may also have been explored, since they also play a significant role. और जो लार्ज स्केल रिसाइकलिंग और ई वेस्ट is still in its infancy stage. Most of the recycling of valuable material is carried out within the informal sector using inefficient and unsafe technologies. If the regulatory targets were to create a vibrant market for recycling, the existing formal and informal players would have to play a crucial role. And in light of this, the complete silence on regulating registered collectors, dismantlers, and producer responsibility organization, it is puzzling why there is silence in new rules. In addition, the informal sector accounts for a vast majority of e-waste processed in India. Most e-waste policy debates have centered around the integration of informal into the formal systems. ये जो proposed regulations हैं, however, place the responsibility of such integration on state governments without specifying what the incentives are for them to do this. और जो steering committee है, उसमें भी representation ठीक नहीं है. There is lack of representation. The rules propose the chairman of CPCB as the chairperson of the committee, which would include representatives of the Environment Ministry, the Electronics and IT Ministry, and the associations of producers and recyclers. But it is surprising that representation from science, academia, and civil society organization is not deemed appropriate. उनको भी तो उसमें include करना चाहिए था. At a time when the technical feasibility and commercial viability of different recycling technologies and approaches for e-waste components is being worked upon in India, a target of recycle 60% of the e-waste appears too optimistic. In the ministry and the Center Pollution Control Board, अगर ये decide करते हैं to go ahead with this recycling, these targets, they should come up with guidelines on how the regulated entities must demonstrate compliance with the targets. हम यूरोपियन कंट्रीज का हमारे सामने एक्सपीरियंस है कि recycling targets would likely be much more difficult for the
regulators to monitor and enforce compared to collection targets. और आखिर में मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि न्यू टेक्नोलॉजी टू कैप्चर द ग्लोबल वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इन e-waste and create global circular value chains, use new technology, innovations होनी चाहिए to create service business models, better product tracking, and manufacturer or retailer take back programs. ये मैं इतना मैं कहना चाहूँगा. Thank you, Neeraj ji, for your valuable, important suggestions you mentioned here. And now, before ending, I'll request Jindal ji. He want to say some things, then after that, yeah, Jindal ji. Sir, sorry, when concluding remarks were there from Neeraj ji, I'm sorry, I'm again entering, but No, sir, no issue, sir. Yeah. EC system, that environmental compensation system which has been brought into the picture. I thought when I was, associated in 2016 and with these laws and rules, the same division, I thought it's a novel system and it will do, wonders. It has become a, there are no proper guidelines. Individual officers decide themselves and they put it. And sir, let me tell you, I have handled 6 cases and all have failed. None industry has paid EC. They were not required to pay EC because law of natural justice has not been followed while putting EC. It has become a way of extortion, and which is appropriate word. So, something we has to start from what is happening in environmental laws. First, we create something in the, start writing in the papers. Then we make suggestions, then guidelines, and then rules and regulation, and then we made it a criminal liability. That is unfortunate. You should, without evaluating what system has happened, what is not. I remember Mr. Jairam Ramesh, he was minister, environment minister. He was in Ankleshwar. He went there for a function, and during daytime, in the industrial area, everything was fine. No smell, nothing, no effluent. And his arrangement was made somewhere else. He said, no, I'll stay here only. So he stayed there. During night, then he woke up, or he never slept, and he went to the industrial area at 11:30 and 2:30. And it was havoc. There are CTPs. He said each and every nala was having havoc. So, and the system is there in place, and system was there in place. Then he ensured, maybe because of the political reason or otherwise, that next 4 years there were no industrialization in Ankleshwar and nearby area. Thank you very much. Thank you, sir. So today we discussed the new e-waste rules, but definitely I just want to finally just one thing, that though e-waste is valuable component, so it's not finding a way more in the landfill as compared to other solid waste. But definitely with these rules, the aim is a lot of some modifications may be further needed, so that it is though it is maybe going to unorganized sector, the main aim is to be
recycling should be very scientific way, which is possible only by the kind of a very technically qualified recyclers. So ultimate should be all the e-waste must go to a very recycling for a very scientific way. That is the aim, so that it should not pollute the environment or the hazardous substance in there. They should not pollute the environment. So with this word, I'll thanking all the speakers today, and thanking all the going to be recycling based, that the target. Please. Whatever in the earlier rules. With this remarks, I'll thank